द लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन। तो लाइन एक्सटेंशन भी रिलेटेड है, तो डोंट गेट दिस थिंग। काफी सारा, जैसे मैंने बताया कि ये डोंट टेक ईच ऑफ देम एज कि सारा, just think of them as for, let's say, understanding perspective. So some of them are related to each other, some of them are opposite to each other, some of them are closely meaning the same thing in one way or the other. Law of line extension में क्या करता है कि line extend नहीं करना है अपना. There is an irresistible pressure to extend the equity of the brand. For example, किसी का कोई product hit होता है, तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे लाइंस को एक्सटेंड करता है, वो और बहुत सारे इसमें स्टेप करने की कोशिश करता है ना. लेट्स से समवन गेट्स फेमस एज अ चीज, तो फिर वो दूध भी बनाते हैं, फिर वो ये भी बनाते हैं, फिर वो ये भी बनाते हैं, फिर वो 10-15 इसमें दे कैन एक्सटेंड. बट इन सम केसेस दे मे बी ओवरस्टेपिंग ऑन समवन एल्सेस वर्ड, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कंपनी है जो जिसका अपना मार्केट नीश है, बट उनका है ना, दे वांट टू स्टेप समवन एल्सेस वर्ड, they will want to get into someone else. ठीक है, less is more basically. So the idea is don't extend the line and get into something that you will not account for or you are not prepared for, or let's say someone else is on that one. Okay, the law of sacrifice. Law of sacrifice means again similar thing, ये इससे related है. लाइन एक्सटेंशन में क्या है कि लेस इज मोर हमने देखा कि आप instead of getting into a lot of similar products related to success of one product, you should not extend the line, or you should respect the boundaries of a lot of factors basically. Less is more. You have to stick to what works basically and do one thing and do one thing well. For example, हम टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं, and this is a general good principle you may have heard or may not have heard, but do one thing and do one thing well. Single responsibility principle भी एक होता है. सिमिलरली द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस भी उससे रिलेटेड है, यानी कि आप एक चीज चुन रहे हैं तो आप दूसरा हटा रहे हैं, है ना. लेट्स से कोई बोलेगा कि अरे मैं ये 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करता हूँ और तीनों में मैं 33% टाइम, मनी, एनर्जी डेवोट कर सकता हूँ, और तीनों का भी मैं आई कैन गेट देम टू सक्सेस, है ना. ऑल 3 हैव पोटेंशियल, बट डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? मे बी यस. Okay, but maybe not due to a lot of factors. He may be alone on resources, or he may be short on funds, or he may be short on a lot of other factors. So what is a good idea? The good idea is not to try all 3 at once. The good idea is to start one by one, or the good idea is to sacrifice something and get up with something, or start with something. You have to give up something in order to get something. So instead of doing multiple things at once, आप इसको लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हमने देखा था कि persistent multi switching का प्रिंसिपल देखा था हमने. The brain is not able to focus on multiple things or pay attention to multiple things at once. So what you should do, you should sacrifice on some of the things, and you put a stopwatch or buzzer कि अभी ये चलो 10 चीजें कर रहे थे, अभी ये एक ही करेंगे, है ना. Instead of doing 10 things, do one thing, but do one thing well first, and then you get confidence, and then if you can focus, you can start with other things, or you can do more things in terms of products. Then the law of attributes. Law of attributes में क्या होता है? For every product or for every attribute there is an opposite and effective attribute. तो अलग अलग attributes को चुनते हैं companies. जैसे you see a beautiful example here, the I think the toothpaste example that I was talking about. Toothpaste example में क्या होता है? You see on the right side there is someone who launched a colorful paste, different colors, and they claim to have, let's say, whitened teeth. तो they will propose something, है ना, कि हम दांत सफेद करते हैं. पीले दांत को सफेद करते हैं. And the other one will come, he is not taking that same attribute. On the left side, let's say Pepsodent, for example. तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है फ्रेशन्स ब्रेथ, ठीक है. कोई और आएगा, समवन विल से क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स वाला भी आता है अभी, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. सो व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट न्यू एट्रीब्यूट्स, दे विल डिवाइड द मार्केट
जैसे हमने पहले देखा था ना, it's also related to that other law, the law of basically division. One is attribute is dividing into other and other, like smart TVs. Similarly, toothpaste market is also dividing. Similarly, other things. They will create new and new categories, new and new attributes. They will pick different attributes. You know, get rid of bad smell. So basically, it freshens breath. So that's one way to launch a cool toothpaste, to tell people how it freshens their breath. On the other hand, someone was whitening the teeth. Someone will make your teeth more stronger. कोई बोलेगा कि हमने vitamins भी डाल दिए उसमें. There are toothpaste with that. The idea is they will get into new and new attributes and they will divide the market. They will pick different things and launch basically in the same domain. They will compete. How? They will compete by picking different attributes. तो essentially हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे related है ना? जैसे ये law of category से भी related है थोड़ा थोड़ा, कि they are creating a new category, है ना? They are creating a new category for themselves. So it's related to the law of category. It's related to the other laws as well. Law of candor. Law of candor is beautiful. Law of candor is that people will come and admit a mistake. इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आता है, द टेस्ट दैट यू हेट एवरी डे, लिस्ट्रीन. So there are breath fresheners which taste worse, right? You want to spit them out. How they promote it? They'll use the power of negativity. They will admit their negativity. They will admit their bad thing. Slow trains, slow locals. So in these cases, what will happen? The customer will give you the benefit of doubt, of honesty. So when you admit a negative, you will typically get a positive. Listerine is one of the best selling. When you admit a negative, the prospect will give you positive. Someone will say we are basically number 2. बर्गर किंग पूरी सब लड़ाई करने के बाद, years of war with McDonald's, and the Burger King will finally say we are number 2 in burgers, or let's say number 2 fast food or something like that. Then they'll start getting more credit. It could be another example. ठीक है, इस लॉ से क्या पता चलता है हमें? इस लॉ से पता चलता है कि if you have a fault, if you think there is a negativity, or if there is a loophole, or if there is some problem or some issue, you can still market it by admitting it. It may not be applicable to all the cases, but in some cases you can showcase bugs as features. Right? You can admit the negativity and the prospect will. There is another nice law here, the law of singularity. Singularity में क्या होता है? In each situation, only one move will produce substantial. जैसे हमने ब्लैक स्वैन का एग्जांपल देखा. ब्लैक स्वैन का हमने सुना. It's a big book. It's a by another author. It's very famous. But just understand, someone basically, to go few seconds into this. So we used to believe all swans are white. सभी हंस सफेद होते, ऐसा मान्यता था. But then one fine day, like for 50 years or 60 years, and then one fine day someone saw a black swan, which are rarely visible. From that day, they became the metaphor of a black swan event. जैसे मैंने बताया कि let's say someone will buy funds, or someone will start investing in 1980. Someone had started investing in 1980. They did continuous investments for the next 20 years. They would get, let's say, a near average return on all the remaining years. But when the dot-com bubble happened, it was down 22%. It was down 50%. It was down. So that one event changed the average by a lot of mark. Law of singularity will say that, let's say you will do 100 events, you will launch 100 things, you will do 100 steps. Only one or few of them will produce substantial results. This is also related to the 80-20 principle. हमने 80-20 में भी देखा था कुछ examples कि some efforts will create more results. Similarly, in business or in marketing also, there are some things that will create more results. In each situation, only one move, hyperbolically speaking, but could be more,
will produce more results. Law of unpredictability है. Unpredictability tells us that we are not able to predict the market. And हम इतना सब laws देख रहे हैं, तो we see that they are essentially related to a lot of basic principles only. कुछ नया नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि don't think of these laws as that we can follow them as templates or any company will want to कि चलो ये सब follow किया टिक 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 टिक, ये वैसा नहीं है. This is more at the understanding level. तो law of unpredictability क्या कहता है? It means you cannot predict the business, you cannot predict the plans. आप सब कर लोगे और फिर भी फेल हो सकता है वो स्टेप और वो पार्ट और वो डिसीजन और that customer might give you problem which so if you don't write your competitors plans you can't predict the future. This basically it is written in the complex words, this line. I'll rephrase it. If you are able to predict your competitor then only you can predict the future. तो आप अपना ही नहीं बता सकते तो competitor का कैसे बताओ? Unpredictability means you may follow everything but it may go wrong. So what does it mean? We will see in another law. One of the other law will relate to it, but the idea is you should be prepared. हम बोलेंगे कि चलो ये हम लॉन्च करते हैं ये तारीख पे, तो कोई आके बोलेगा अरे प्लान बी किधर है सपोज, या सबने लॉन्च किया या व्हाट हैपेंस if it goes wrong, what happens if someone has a problem in between, what if some contingency happens, or what if we don't meet certain deadline on a dependency. So are we prepared? But then the plan fails typically, right? Because we are not prepared, or anyone for that matter. So the law of unpredictability is that you should be prepared for unpredictable situations. How much soever you may have prepared, things may still go wrong. as you wouldn't expect to happen, obviously, but things do go wrong, right? All the time, most of the time. ठीक है. लॉ ऑफ सक्सेस इज सक्सेस ऑफन लीड्स टू एरोगेंस एंड एरोगेंस टू फेलियर. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है. दिस लॉ, ये लॉ बताता है कि एक सक्सेस से हमको लगता है कि वी हैव बिकम द किंग ऑफ द मार्केट और वी हैव बिकम द किंग ऑफ व्हाटएवर वी आर, बट डोंट थिंक, राइट, बिकॉज सक्सेस टिपिकली लीड्स टू एरोगेंस. देयर आर लॉट ऑफ stories, anecdotes, articles about this. It's a very general, very important principle of life also, that don't let success get to your head. Don't become complacent. Don't think कि आज का सक्सेस will last forever in anything. So you have to improve. You have to improve your product. You have to improve your features. You have to improve various aspects. You have to continuously work on, let's say, the quality improvement or continuous reinvention. That's how they have R&D departments, right? Companies like Google or lots of other good companies who are giants, they have a lot of investments in R&D. They continuously invest to research and innovate. They don't feel complacent with one or two successes. Okay, so this is the law of failure I was talking about. It's related to the unpredictability. Right? जैसे हमने बताया कि you are not able to predict. Things may still go wrong, irrespective to your preparation. So law of failure is simple. It says failure is to be expected and accepted. तो आप पूरा contingency plan बनाओगे, plan B बनाओगे, plan C बनाओगे, but you will still be prepared for other failures. You will still be like, ऐसा नहीं होगा कि सब रुक जाएगा. माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं हम टेक्निकल, इसमें कुछ लोगों को पता होगा. तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, छोटे छोटे सर्विसेज होते हैं, वेब सर्विसेज. We may go into that topic in some other technical this thing, but think that micro services will link to each other. है ना? कोई हमारे सर्विस को कॉल करेगा, फिर हम समझो जीपीएस, गूगल के ये थर्ड पार्टी सर्विसेज को कॉल करेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेन ऑफ नेटवर्क ऑफ सर्विसेज इंटरडिपेंडेंट. तो उसमें क्या होता है, अगर एक सर्विस ब्रेक हो जाती है ना बीच में, तो पूरा फ्लो टूट जाता है. बट दैट इज नॉट अ गुड पैटर्न, राइट? तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, दे प्रिपेयर फॉर दीज फेलियर्स.
there is a chain of responsibility pattern. There is our other microservices patterns that get followed. A chain of services are being called. A very complex, let's say Google or basically Google is very big, but think of as उस दिन हमने देखा था कि Zomato or even of these one of these successful IT companies, anyone you can take who have at least 10K or so active users, they'll have a lot of microservices talking to each other. तो एक सर्विस फेल होती है, तो जैसे फेसबुक का हमने देखा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक। तो कई बार ऐसा होता है कि हम फेसबुक इस पे जाते हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स इन फेसबुक, राइट? एक साइड बार में आपके फ्रेंड्स लोड होते हैं, स्टेटस लोड होता है, क्या-क्या लोड होता है, वॉल पे पूरा स्टोरीज लोड होता है, आइकॉन्स लोड होते हैं, चैट्स, नोटिफिकेशंस, गेम नोटिफिकेशंस, आई डोंट नो, आई डोंट यूज फेसबुक दैट मच, बट बहुत सारे उस पे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सम माइक्रो सर्विसेज आर ब्रेकिंग एट दैट टाइम। तो आपको ऐसा कभी-कभी एक्सपीरियंस होता है कि आप वॉल लोड होता है लेकिन बाकी कुछ लोड नहीं हो पाता, चैट्स लोड नहीं होता है, या चैट्स लोड हो रहा है मे बी, तो नोटिफिकेशंस अभी लोड नहीं हो रहे। वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम विद दिस। तो वो लिखा आए या नहीं आए, बट जनरली दे आर, यू आर गेटिंग सम डमी रिस्पॉन्स देयर और यू आर सीइंग अ लोडिंग आइकन। वो क्या करते हैं, उस पे फिल्टर्स लगा देते हैं ऊपर से। वो आपकी सारी ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और सारी सर्विसेज का जो भी आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, तो वो लोग उसको मॉनिटर करते हैं। इफ इट क्रॉसेज अ लिमिट, दे विल स्टॉप और दे विल डिक्रीज द परफॉर्मेंस। इंटरनेट वाला तो सबको समझ में आ जाएगा। हम लोग ये जियो वगैरह यूज करते हैं, राइट? बहुत सारे, कुछ लोग जियो यूज करते हैं क्या? जियो, एयरटेल वगैरह तो ये सब तो यूज करते हैं, तो उस पर लिमिट होता है हमारे इंटरनेट का, उसके बाद स्पीड स्लो हो जाता है। रेट लिमिटिंग में वो लोग ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं प्लेटफॉर्म पे आपके। इंटरनेट में भी होता है, आईएसपीज में भी होता है, केबल पे जब लोड आता है तो वो लोग ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। एनीवे, सो द आइडिया इज फेलियर टू बी एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। तो माइक्रो सर्विसेज में फेलियर्स होते हैं, कोड में फेलियर्स होते हैं, अ, सब जगह पे फेलियर्स होते हैं। मार्केटिंग, आपके कैंपेन्स में, प्लान्स में, सब जगह पे फेलियर्स होते हैं। थिंग्स कैन ऑलवेज गो रॉन्ग एंड थिंग्स एक्चुअली नेवर गो एज पर द प्लान मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जितना भी प्लान करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गो एज पर द प्लान। सो द आइडिया इज टू प्रिपेयर एंड एक्सेप्ट द फेलियर। एक्सपेक्टेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सेप्टेड तो ठीक है, लास्ट वाला, वो हम व्हेन अ फेलियर हैपेंस हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं उसको, रो धो कर करें या जल्दी से करें या कंटिजेंसी प्लान किया है या नहीं किया है, बट एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बिकॉज वी थिंक वी आर ऑलवेज राइट। एवरीवन थिंक्स, due to egoistic this thing, we always think we are right, we always think things will never go wrong, but the idea is to accept. There is another nice law of the hype. Hype is just about the media typically. It's always hype. The situation is often the opposite. तो मीडिया वाले हम देखते हैं, ये सब तो रोज सब लोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल may have idea about this because it's very clearly related to today's media. सिचुएशन को हाइप हो जाता है, तो यू नो कि भैया इलेक्शन है, तो व्हाट मीडिया वांट्स टू शो, यू नो they are focusing on only certain celebrities, that they are only focusing on certain businesses, they are only focusing on certain events that catch entertainment or they catch viral responses from people, है ना? They are not worried about all the things happening in the world. They are not worried equally, let's say equally worried about all the good initiatives being taken. लोग खाना बांट रहे हैं, लोग पेड़ लगा रहे हैं, लोग जानवरों को जाके सेवा कर रहे हैं, है ना? लोग दान दे रहे हैं, वो सब नहीं आता न्यूज में, राइट? बिकॉज दैट डजंट कैच अटेंशन। वो बिकता नहीं है, तो जो बिकता नहीं है वो बनाते नहीं है, वो दिखता भी नहीं। तो द लॉ ऑफ द हाइप इज कि हम जो भी देखते हैं मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में या मार्केट में या न्यूज में, और लेट्स से पोस्टर और पेज 3 और इवन द होल न्यूज़पेपर, इट इज टिपिकली द अपोजिट। द सिचुएशन इतना डिफरेंट होता है कि टिपिकली अपोजिट होता है। Once related, there is a nice example of Google Glass. So what will happen? Google had launched a very nice product called as Google Glass. It has had a lot of high tech claimed features, but then it was a failure product at that time. Maybe the market was wrong, maybe it was not this thing, but it was very much hyped product कि भाई this will become the next thing. But next thing बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, but सब चीजें next thing नहीं बन जाती, है ना? कोई गाना बनता है, हमको पता है, कोई मूवी बनती है, तो इतना सेंसेशन बनता है कि हमको पता है, अरे दिस इज द नेक्स्ट थिंग। कश्मीर फाइल्स, एवरीवन वॉच कश्मीर फाइल्स, है ना? लेकिन नॉट एवरीथिंग बिकम्स द रियल नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि 2-4 महीने में हमें लोग भूल जाते हैं, फिर हमें पता है इट्स ऑल हाइप।
because it's the hype. It's based on a temporary hype. It's based on a temporary curve. But most of the things, 99% of the things will not stand the law of time. They will be. Situation is typically the opposite of the way it appears in the rest. Law of acceleration. We are moving towards the last ones, perhaps the second last one this is. So law of acceleration is कि successful programs are not built on fade, they are built on trends. तो इसका टेक अवे ये है कि फेड का मतलब क्या होता है? फेडिंग इफेक्ट बोलते हैं हम. ट्रांजिशन फेडिंग, कुछ चीज फेड हो जाती है ना, जैसे मेमोरी में फेड हो जाता है कुछ, या फेड हो जाना बोलते हैं हम, या फेड इन एंड फेड आउट. तो कोई चीज जो आपके इसमें आती है साइट में और फिर साइट से गायब होती है. तो थिंक ऑफ द ट्रेंड्स इन द मार्केट, है ना. ओवरनाइट कोई चीज फेड होती है मार्केट में और ओवरनाइट फेड आउट हो जाती है. तो देर आर सो मेनी फेड्स, बट देर इज, let's call them fashion maybe, right? Fashion repeats every few weeks, it will change every few months, it will change every few days, it will. But think of the trends. What are trends? Trends कोई बोलेगा अरे मैं पूरे 5 साल का डेटा देखता हूँ, पहले लास्ट 1 साल का पूरे डेटा देखता हूँ, एंड देन आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एक्सिलरेटिंग, किस तरफ जा रहे हैं. म्यूजिक का ट्रेंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल. मेडिटेशन में अभी क्या ट्रेंड है? पीपल आर गोइंग फॉर जेन और पीपल आर गोइंग फॉर मोनेस्ट्रीज, है ना. व्हाट इज द ट्रेंड इन, लेट्स से, क्लोथ्स? सो द ट्रेंड इज रिपीटिंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस. बट व्हाट इज द ट्रेंड इन मूवीज? व्हाट इज द ट्रेंड इन एंटरटेनमेंट? एक ट्रेंड है. सो द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सेज कि आप डोंट बिल्ड योर प्रोग्राम ऑन बेस्ड ऑन वन फेड इफेक्ट. Don't build your strategy, don't build your product on one fade in effect or fade out effect. Look at the trend, look at what's going on, है ना. Finance है, always works, right? But yeah, obviously the trend is changing. I gave example of insta banking and banking earlier, but it's always there. So it's a trend, and you will want to observe the trends in the finance industry also. Similarly, the law of acceleration is you will have to watch the trend, not just a simple temporary effect caused in the market or temporary fluctuation, temporary fading effect. Okay, last but not the least, we have the law of the resources. It's very important. It's about funding. It's about the money. It's about the sources. It's about basically the capital and manpower and other high-tech infra and other governance resources or land or other things that a business or a product or a company would need to stand on. Law of resources में क्या है? Without adequate funding, an idea won't get off the ground. So if you just have a brilliant Marvel idea, then you won't get off the ground because you would need some homework. Because you would need some money to get off the ground. Campaign चलाने के लिए you will have to pay. You will have to invest. And resources only doesn't mean the capital here, as I said. It will be manpower, the people working. It will be the infrastructure that we have or anyone has, any company for that matter. It will be all the governance and IP related this thing. And it will be all the other resources, also the digital resources. Okay. So these are some of the laws. We have ended it.